ने भी इस पर सदन में ही बयान दिया। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जो खुद विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। आखिर क्या ताजा स्थिति दिखाई दे रही है? पहले दिन इतना हंगामा? देखिए प्रशांत, बिल्कुल पहले ही दिन हंगामा हुआ क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी के एमएलए हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया और बताया कि 370 जो है वो रेस्टोर होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा ने अच्छा किया। और ये जो रेजोल्यूशन यहाँ पे उन्होंने पेश किया उसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और बीजेपी ने हंगामा किया और प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने स्पीच में ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि जो भी डिसीजन 2019 में लिया गया वो उसके साथ में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यानी वहीदुर रहमान पर्रा पे उन्होंने जोरदार निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों ने कैमरा के सामने ये शो जो है ये स्टील करने की कोशिश की। हालांकि जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि जो नए एमएलएज हैं उनको पहले रूल समझने चाहिए और उसके बाद जो है रिजोल्यूशंस पेश किए जाने चाहिए। तो फिलहाल हंगामा पहले ही दिन हो गया क्योंकि 6 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन हुआ, क्योंकि 2018 में जो है असेंबली को भंग कर दिया गया था और 2019 में धारा 370 और 35 से हटाई गई थी। और उसके बाद जो रिसेंटली इलेक्शन हुए उसका पहला सेशन जो है 5 रोजा सेशन आज से शुरू हुआ और पहले ही ऐसा समझा जा रहा था कि हंगामा खैज ये होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन भी स्ट्रांग है क्योंकि 29 एमएलए जो है वो बीजेपी के पास है और बीजेपी ने अपनी ऑब्जेक्शंस रेज कर दी। मीनवाइल मैं आपको बता दूं, इस सेशन के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये समझा जा रहा है कि आने वाले 4 दिनों में भी असेंबली में हंगामा ही रहेगा क्योंकि पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसकी मांग वो करेंगे स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए, और 370 और 35A पे क्या वो कोई रेजोल्यूशन असेंबली में पेश करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन धारा 370 के अलावा भी स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक रेजोल्यूशन पास करेगी। लेकिन फिलहाल वहीदुर रहमान पर्रा के इस रेजोल्यूशन के पेश किए जाने के बाद हंगामा हुआ है असेंबली में। बीजेपी ने जोरदार ऑब्जेक्शन की, जोरदार एतराज किया। विधानसभा सत्र का पहला दिन जबरदस्त हंगामा जम्मू कश्मीर में। दरअसल सत्र के पहले ही दिन पीडीपी ने अनुच्छेद 370 की बहाली का मुद्दा उठा दिया। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान ने प्रस्ताव पेश किया जिस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जाहिर की और जबरदस्त गहमा गहमी देखी गई है। विधानसभा सत्र का पहला ही दिन 370 का मुद्दा उछला और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर सदन में ही बयान दिया। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जो खुद विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। आखिर क्या ताजा स्थिति दिखाई दे रही है? पहले दिन इतना हंगामा? देखिए प्रशांत, बिल्कुल पहले ही दिन हंगामा हुआ क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी के एमएलए हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया और बताया कि 370 जो है वो रेस्टोर होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा ने अच्छा किया। और ये जो रेजोल्यूशन यहाँ पे उन्होंने पेश किया उसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और बीजेपी ने हंगामा किया और प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने स्पीच में ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि जो भी डिसीजन 2019 में लिया गया वो उसके साथ में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यानी वहीदुर रहमान पर्रा पे उन्होंने जोरदार निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों ने कैमरा के सामने ये शो जो है ये स्टील करने की कोशिश की। हालांकि जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि जो नए एमएलएज हैं उनको पहले रूल समझने चाहिए और उसके बाद जो है रिजोल्यूशंस पेश किए जाने चाहिए। तो फिलहाल हंगामा पहले ही दिन हो गया क्योंकि 6 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन हुआ, क्योंकि 2018 में जो है असेंबली को भंग कर दिया गया था और 2019 में धारा 370 और 35 से हटाई गई थी। और उसके बाद जो रिसेंटली इलेक्शन हुए उसका पहला सेशन जो है 5 रोजा सेशन आज से शुरू हुआ और पहले ही ऐसा समझा जा रहा था कि हंगामा खैज ये होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन भी स्ट्रांग है क्योंकि 29 एमएलए जो है वो बीजेपी के पास है और बीजेपी ने अपनी ऑब्जेक्शंस रेज कर दी। मीनवाइल मैं आपको बता दूं, इस सेशन के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये समझा जा रहा है कि आने वाले 4 दिनों में भी असेंबली में हंगामा ही रहेगा क्योंकि पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसकी मांग वो करेंगे स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए, और 370 और 35A पे क्या वो कोई रेजोल्यूशन असेंबली में पेश करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन धारा 370 के अलावा भी स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक रेजोल्यूशन पास करेगी। लेकिन फिलहाल वहीदुर रहमान पर्रा के इस रेजोल्यूशन के पेश किए जाने के बाद हंगामा हुआ है असेंबली में। बीजेपी ने जोरदार ऑब्जेक्शन की, जोरदार एतराज किया। विधानसभा सत्र का पहला दिन जबरदस्त हंगामा जम्मू कश्मीर में।
दरअसल सत्र के पहले ही दिन पीडीपी ने अनुच्छेद 370 की बहाली का मुद्दा उठा दिया। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान ने प्रस्ताव पेश किया, जिस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जाहिर की और जबरदस्त गहमा गहमी देखी गई है। विधानसभा सत्र का पहला ही दिन 370 का मुद्दा उछला और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर सदन में ही बयान दिया। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जो खुद विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। आखिर क्या ताजा स्थिति दिखाई दे रही है? पहले दिन इतना हंगामा? देखिए प्रशांत, बिल्कुल पहले ही दिन हंगामा हुआ क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी के एमएलए हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया और बताया कि 370 जो है वो रेस्टोर होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा ने अच्छा किया और ये जो रेजोल्यूशन यहाँ पे उन्होंने पेश किया उसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और बीजेपी ने हंगामा किया और प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने स्पीच में ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि जो भी डिसीजन 2019 में लिया गया वो उसके साथ में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यानी वहीदुर रहमान पर्रा पे उन्होंने जोरदार निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों ने कैमरा के सामने ये शो जो है ये स्टील करने की कोशिश की। हालांकि जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि जो नए एमएलएज हैं उनको पहले रूल समझने चाहिए और उसके बाद जो है रिजोल्यूशंस पेश किए जाने चाहिए। तो फिलहाल हंगामा पहले ही दिन हो गया क्योंकि 6 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन हुआ, क्योंकि 2018 में जो है असेंबली को भंग कर दिया गया था और 2019 में धारा 370 और 35 से हटाई गई थी और उसके बाद जो रिसेंटली इलेक्शन हुए उसका पहला सेशन जो है 5 रोजा सेशन आज से शुरू हुआ और पहले ही ऐसा समझा जा रहा था कि हंगामा खैज ये होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन भी स्ट्रांग है क्योंकि 29 एमएलए जो है वो बीजेपी के पास है और बीजेपी ने road network, more efforts are required to connect the remaining inaccessible areas. My government will fully leverage funds from centrally sponsored schemes like PMGSY and NABARD funded programs to realize the vision of connectivity every habitation with a road. Implementation of major ongoing connectivity projects will be fast-tracked by facilitating acquisition of land, forest clearances and removal of encroachments. Ongoing expressway, national highway and ring road projects for Jammu and Srinagar cities will be speeded up for their early completion. Work on the upgradation and consolidation of the Jammu-Rajouri-Poonch National Highway will be expedited for its early completion. New national highway projects will be taken up with the central government to improve connectivity to remote and backward pockets to accelerate economic growth. Connectivity of rail to the valley, which will be a reality soon, will be a turning point for economic development and prosperity. Night landing facilities at Jammu and Srinagar airports will further enhance connectivity and boost the tourism sector further. My government will take all necessary measures to ensure that the development dividend of these initiatives reaches the remotest pockets and uplifts their lives and livelihood. My government will pursue implementation of projects for rail connectivity to important unconnected areas, including the border districts of Rajouri and Poonch with the Government of India. My government is committed to provide 200 units of free electricity to deserving households, for which modalities are being worked out. JNK is endowed with abundance of water resources that are yet to be harnessed fully. My government is committed to harnessing their full potential so that their economic dividend enhances people's lives and JNK financial position. My government will seek the support of the Government of India for a significant leap forward in our energy sector. Completion of 4 mega hydroelectric power projects with sanctioned capacity of 3014 megawatts will be expedited for doubling the hydropower generation capacity by 2026 to not only make JNK self-sufficient in power, but also to enable us to generate revenue from these vital green resources. Another 4 mega hydroelectric power projects of 1,818 megawatts will be followed rigorously to get the work on these power generating projects started. The Rangarajan Committee report, crafted under the guidance of former RBI Governor Dr. C. Rangarajan in 2011, recommended a roadmap for creating jobs and enhancing economic growth in Jammu and Kashmir.
My government will pursue the implementation of the report with the Government of India to address structural issues in the economy, support skill building initiatives, and stimulate inclusive growth. Effective collaboration with the Government of India would be essential to mobilize resources, funding, and requisite support necessary for realizing many of these reforms. My government will solarize all government buildings with a tentative cumulative capacity of 300 megawatts under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. 84,000 households will be solarized initially. Small hydropower projects will also be given the required focus to harness their full potential. My government is committed to providing free, clean and safe drinking water to all. To achieve this, 3,256 water supply schemes at an estimated cost of more than rupees 13,000 crore are under execution, which will provide functional household tap connections to all the 19.27 lakhs rural households. This will be completed by March 2025. For quality assurance of drinking water, NABL accredited labs will be established at appropriate levels. Tourism sector is a major pillar of the economy of J&K, which can boost various services and industrial sectors like transport, hospitality, horticulture, and small-scale industry, thereby generating incomes and job opportunities for the local population. My government will ensure that all benefits are extended to the tourism sector as an industry. This will ensure that this sector witnesses requisite growth in investment for improving tourism infrastructure and services. My government will focus on enhancing the quality of tourist experience and devise appropriate interventions to manage the tourist inflow. Concerted efforts will be made for accelerated development of new tourist destinations both in Kashmir as well as Jammu, so that the immense untapped potential of our beautiful landscape is harnessed for improving the experience of the tourists and lives and livelihoods of the locals. Work on Tavi Barrage project, an artificial lake, is also in full swing and likely to be completed soon, which will enhance tourism potential of Jammu city. The upcoming railway connectivity to Kashmir, expected to be fully operational soon, will indeed provide a significant boost to tourism in both Kashmir and the Pir Punjab region. JK Industrial Policy 2021-30 has been notified for encouraging private investment and to boost the industrial sector. New central sector package of rupees 28,400 crores is also available for encouraging new investments. My government will ensure that requisite infrastructure for the development of industrial units is made available on priority. Subsidized industrial land is transparently allotted and it actually translates in attracting new investment, creating employment opportunities for the locals, develop backward regions and expand existing industrial units. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution for reviewing the J&K Industrial Policy 21-30 to achieve this objective. My government will develop 46 new industrial estates with all the modern facilities to attract industries and enhance job opportunities. These new initiatives will spur employment, avenues and enhance economic growth. Further focus will also be on development of industrial parks or clusters to provide shared facilities and resources, making it easier for small and medium enterprises to thrive. A suitable procurement policy to further support the MSMEs will also be introduced. Reform process will be further strengthened for ease of doing business. My government will promote circular economy by encouraging industries to adopt sustainable practices and technologies that minimize environmental impact and waste. Agro-based industries will be developed to utilize local resources sustainably. Handloom and handicraft sector will be given impetus, including through e-commerce platforms, to increase the production and exports. GI tagging of crafts will be promoted to provide them markets at world level. My government will continue supporting local artisans by providing them with better access to market and credit to promote traditional craft besides
facilitating marketing of local products through trade fairs, exhibitions, and online platforms. Srinagar was designated a UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art in 2021. This recognition acknowledges Srinagar's rich heritage and excellence in crafts, particularly its world-renowned Kashmiri handicraft. As part of UNESCO's Creative Cities Network, Srinagar joined a select group of cities worldwide recognized for fostering innovation and creativity as strategic factors for sustainable urban development. My government is committed to providing state-of-the-art healthcare facilities to the citizens of Jammu and Kashmir. Healthcare facilities and services in rural areas focusing on maternal and child health will further improve. Critical care blocks will be established in districts for strengthening of emergency services. The healthcare sector in Jammu and Kashmir is set to undergo significant advancement as the government prioritizes the expansion of medical education and health services. This initiative aims to enhance the quality of accessibility of healthcare for the people of the region. The government will focus on increasing MBBS, PG and nursing seats and will add new tertiary care services and advanced courses for strengthening the healthcare facilities at tertiary level. It is committed to enhancing the healthcare landscape in Jammu and Kashmir by focusing on two crucial aspects: attracting the best medical professionals to newly established institutions and addressing the challenge of brain drain from the region. This approach aims to build a sustainable and high-quality healthcare system that meets the needs of the population. My government will focus on strengthening primary healthcare services for making available medical treatment and drugs at the grassroots level. Preventive diagnosis, screening will be carried forward for timely diagnosis of the non-communicable diseases and their treatment. Universal health coverage will be carried forward with better services for the benefit of common masses. My government will create a Chief Minister's Medical Trust for providing financial assistance to the needy for terminal diseases like cancer, heart and kidney transplant. Facilities for dialysis will be created at sub-divisional level to meet the rising need for it in recent times. The drug maniac in J&K represents a complex challenge intertwined with the socio-economic factors and the historical context. Drug abuse in J&K has risen over the past decade, particularly affecting the youth. While efforts have been made to combat this issue through law enforcement and rehabilitation initiatives, the problem continues to remain a challenge. The overarching goal is to not only reduce drug dependency in J&K, but also to create a robust system that addresses the root causes of drug abuse and fosters a supportive environment for rehabilitation and reintegration. By integrating law enforcement with community-based prevention and mental health services, my government is committed to building a healthier, drug-free future for its